आउट ऑफ द BCCI's ऑफिस बॉर्डर गवास्कर की जो स्क्वाड है, तो कैमरा एंगल सेट कर लो, मेरा थोड़ा ऑड है, बट या आई मीन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की टीम अनाउंस हो चुकी है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है, जो नवंबर 8 को शुरू होने वाला था। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस न्यूज़ टू कम आउट फॉर एटलीस्ट अनदर वीक और सो, बिकॉज अगर इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज ख़त्म होती है आमन तौर पे यू थिंक कि भाई इंजरीज को अगर मद्देनजर रखते मे बी आप न्यूजीलैंड के बाद आप ये स्क्वाड अनाउंस करोगे, बट इट वाज नॉट द केस। आई मीन रोहित शर्मा एंड एवरीबडी ट्रिपिंग टू गो। आई मीन गौतम गंभीर को भी पता हो गया कि भाई उनके 15 to 16 मैन स्क्वाड में कौन उनको चाहिए था। लॉट ऑफ न्यू फेसेस आल्सो इन्वॉल्व इन दिस ट्रैवलिंग टूर, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बॉलर्स, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बैट्समैन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। द लाइक्स ऑफ ईश्वरन के भी नाम आ चुके हैं, जो दिलीप ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। ही ऑल्सो लेड द स्क्वाड वेरी वेल, एंड या आई मीन हर्षित राणा का भी नाम है इन अ ट्रैवलिंग स्क्वाड। ट्रैवलिंग रिजर्व में 3 लोग हैं, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी एंड खलील अहमद। सो देर गोइंग फास्ट बॉलिंग हैवी, मतलब वही रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया में। बाउंसी ट्रैक एक्सपेक्ट करे, स्पाइसी विकेट्स एक्सपेक्ट करे। इट्स गोना बी fun. This is like an starting point of the BGT. All the news, all the interviews that were going pre this announcement. I mean, sab kharij ho gaye. Now it's done. And then India South Africa also starting from November 8th. Usme Surya Kumar is the captain. Hardik Pandya is also involved in that team. You've got Ravi Bishnoi, Varun Chakravarti, jo out of Indian squad. He's back now as a proper all-timer. So it's good to see Mayank Yadav and Shivam Dube were unavailable for selection owing to injuries, इसलिए मयंक यादव और शिवम दुबे को वहाँ पे से रियान पराग unavailable for selection is currently at the BCCI Center of Excellence in long term resolution for his chronic right shoulder injury. तो शोल्डर इंजरी की वजह से रियान पराग इज आउट। मयंक यादव के बारे में भी बोलने वाले थे कि भाई मयंक यादव माइट बी गोइंग टू द BJT एंड ये बातें चल रही थी, बट ऑब्वियसली इज टू यंग फॉर दैट। वी स्टार्टेड ऑफ द डे इंडिया न्यूजीलैंड का भी ऑन अ बैट फ्रंट 54 नो लॉस था। हम समझे कि भाई चलो इंडिया की बैटिंग अच्छी होगी। धप बोल के शुभमन गिल गए, धप बोल के यशस्वी जायसवाल गए, विराट कोहली आउट हुए। आई मीन दैट्स बीन ऑल ओवर द प्लेस। इंडिया इज ऑल ओवर द न्यूज़ राइट नाउ। करंटली पुणे में सेकेंड टेस्ट भी चल रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए आप साउथ अफ्रीका का भी स्क्वाड अनाउंस कर दिए, आप ऑस्ट्रेलिया का भी स्क्वाड अनाउंस कर दिए। सो दे आर रेडी टू गो, दे मीन बिजनेस, दे वांट टू सेट द पैथ स्ट्रेट फॉर everybody so that no one has unwanted expectations, and I'm pretty sure the communication is very clear hopefully. But let's start from the days the beginning, India versus New Zealand, and जिस तरीके से start off हुआ था, like I said, we thought कि भाई शुभमन के लिए यशस्वी were on to a good partnership, but unfortunately the wickets started tumbling. Yashasvi and Shubman Gill could not hold up the fort, and New Zealand started crumbling. And credit to Phillips, part-time bowler है Glenn Phillips, but जिस तरीके से उन्होंने bowling करी, Mitch Santner 7 for 15, 7 for 53, incredible spell, pitching it in the right areas. I mean जडेजा की भी विकेट इनिशियली हो गई थी, बट जडेजा समहाउ पोकर फेस बना के निकल गए थे। इनसाइड एज स्लाइटली लगी थी उनको, लेकिन फिर भी दे अवॉइडेड टू टेक द DRS, बट थोड़े रन्स के बाद फिर जडेजा भी निकल गए। पिच की बात करेंगे तो यस, इट्स गोना गेट टफर टू बैट फ्रॉम हियर। आई थिंक न्यूजीलैंड आर इन अ वेरी डोमिनेटिंग पोजीशन राइट नाउ। द वे टॉम लेथम जो इनिंग्स खेला है बहुत आज, आई थिंक कैप्टन नॉक जो बोल रहे थे पूरे कमेंटेटर्स, इट वाज फैंटास्टिक। रन नहीं आ रहे थे उनके, बट इट डिड नॉट होल्ड एम बैक। सबसे बड़ी बात यह कि बार आपको 100 रन की लीड आ गई थी, साइकोलॉजिकली थोड़े आप और रिलैक्स हो जाते हो, आप रिस्क टेकिंग क्रिकेट खेल सकते थे। अगर आप देखो डेविन कॉनवे एंड लेथम केम आउट विद एन अटैकिंग इंटेंट, डिडंट कम कि भाई हम डिफेंसिव अप्रोच रखेंगे, क्योंकि विकेट टूटने का डर इतना रहता है कि आप कभी भी डिफेंसिव मोड में जाओ, इट कुड बैकफायर ऑन यू। 290 की लीड है राइट नाउ, आराम 301 की लीड है राइट नाउ, आराम से आप और एक 50-60 रन अगर ऐड कर दिए, 5 विकेट आपके पास है, टेल आपकी 50 रन बना सकती है। विनो साउदी भी बैट करे थे फर्स्ट मैच में इनके पास, तो अभी ग्लेन फिलिप्स है, अभी इनके पास ग्लेन फिलिप्स है और स्ट्राइक पे टॉम ब्लंडल, तो भाई चिपक गया था, दिख रहा विकेट पे उनको स्पिन खेलने की तकलीफ हो रही थी, बट नाउ ही लुक्स अ लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड, ही गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, ही फेस 70 डिलीवरीज, ही लुक्स लाइक ही ऑन हिज वे टू अ गुड मेड 50। हाईएस्ट स्कोर होगा, अगर 1 रन और बना दिया तो ये हाईएस्ट स्कोर होगा टॉम ब्लंडल का इन इंडिया। So you've got to understand कि भाई if he's looking that confident, biggest surprise is no Kuldeep Yadav in any squad. Yeah, I think Kuldeep Yadav has an injury. That is the story.
that Kuldeep Yadav does have an ongoing injury, which is why he's going to be taking a rest. Kuldeep Yadav is missing from the BJT as well. That's also a very big call. Didn't expect that to happen. But what I know or what I can tell you is that he has been having an injury for a long time now. जिसको वो नहीं बता रहे. But he has an injury going, and I mean Mustafa Bhai will join us as well, so we'll discuss that in detail as well. But yes, Eastwaran being called up, that's a good shout. I mean जिस तरीके से domestic circuit में he's been performing, it's been great. Sudeep Dada, welcome to the show. Hopefully, what is your pitch report on the BJT? What do you expect from the pitches? Akash Deep, Siraj, Prasidh Krishna is back as well. Dulip Trophy में he was also there bowling, and again it's the only thing I have is these guys are also injury prone bowlers. I mean कितना 6-5 टेस्ट मैचेस है, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ फास्ट बॉलर लेके जा रहे. इट्स गुड टू सी सरफराज इज नेम. सरफराज को देख के बहुत खुशी हो गई मेरे को, बिकॉज ही डिजर्व्स दिस स्पॉट, ही डिजर्व्स दिस रोल राइट नाउ. ही फॉट अ लॉन्ग वे. रणजी ट्रॉफी में काफ़ी रन मारे, काफ़ी टाइम वो पिक्चरों में बताते कि सेलेक्टर्स जहाँ पे है वहाँ पे मारो, वो भी करके बता दिया उसने. 50 मार दिया, 100 मार दिया. ही जस्ट बिन क्रेजी. एंड या आई मीन टीम तो सॉलिड है. आई मीन लेट्स सी, वील डिस्कस इन अ बिट. बट या जैसे इब्राहिम भाई बोल रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड विन स्पिनर. आई मीन यस, आई मीन sorry, Sudeep Dara बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड विन स्पिनर. You have to credit that, and again we have a talented spinning lineup with Ashwin. We have Ashwin, we've got Jadeja, we've got Washington Sundar. Washington Sundar आज भी काबिल तारीफ यार, क्या तरीके की bowling करी. He picked up 3 wickets, 3 crucial wickets as well, 4 wickets sorry today as well, and 1 wicket from Ashwin. Washington Sundar ज़बरदस्त है. He's also traveling to the Australian squad. Now the question is कि भाई where did we lose this test match? It's again the batting has let us down. Bowlers did their job to an extent probably, but again I think Sundar got you 7 wickets after tea. He took down the whole New Zealand squad, and उसके बाद आप उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं करे. विराट कोहली की विकेट, अगेन आप जितना भी बोलो, यस ही वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, बट फुल टॉस डिलीवरी पे आप फुल आउट कैसे हो सकते. लाइक इट डजेंट मेक सेंस. मतलब आप इतना उम्मीदों से आया बैंगलोर में, अच्छा आपको बैट के अंदर रन आ गए. आई एम नॉट ब्लेमिंग कंप्लीटली कोहली, इट इज़ ऑल्सो ऋषभ पंत के अगेन दिस इज द क्रिकेट दैट यू गोना एक्सपेक्ट फ्रॉम ऋषभ पंत. ऋषभ पंत वेवर्ड क्रिकेट खेलते, हमें पता है कि भाई उनकी विकेट जाने की रीजंस यूजुअली वो खुद होते हैं, अब्रप्ट शॉट्स खेलने के लिए या दहशत में आके खेलने के लिए. एंड द वे उन्होंने खुद फ्रस्ट्रेट हो गए, वो शॉट खेल के वो खुद गुस्से में आके कि भाई मैं शॉट क्यों खेला. एंड ऑलरेडी आपके आधी विकेट चले गए थे. यू शुड हैव टेकन अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल, बट इट वाज शॉकिंग कि भाई ऋषभ पंत की भी विकेट निकल गई थी. रविंद्र जडेजा को जेको लाइफ मिली बोल के वो रन्स मिले, important runs. I'm not going to take it away. He was taking the attack to the New Zealand bowlers. He was trying, because जो भी हम runs समेट सकते थे वो समेट पाए. जो 156 बना, 56 आपका वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ला के दिया, वरना पूरी टीम आपकी 100 पे बिखर जाती थी. इट वुड हैव बीन अ वर्स्ट शो. अभी इसमें आप 56 ऐड कर दो, न्यूजीलैंड वुड हैव बीन ऑन 357 रन्स राइट नाउ. सो आई थिंक दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट रन फ्रॉम रविंद्र जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर, जो हमारे को थोड़ी बहुत अभी 350 नहीं पार करी. बट अगर वो रन नहीं आते या वो DRS ले लेता न्यूजीलैंड तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. एंड या सरफराज खान भी सबको ब्लेम करो, बट क्वालिटी ऑफ सैंटनर आप डिफाइन नहीं कर सकते. भाई बंदा बहुत सॉलिड बॉलर है. वाइट बॉल फॉर्मेट में ही इनक्रेडिबल कैप्टन है न्यूजीलैंड का. जो आप थोड़ा बहुत सोचते हैं उनको मजबूर कर देता कि भाई वाई इजंट ही देयर अलॉट इन द रेड बॉल फॉर्मेट पर्टिकुलरली. But now, him along with Glenn Phillips, the way they've bowled, and Ajaz Patel भी to an extent थोड़ा बहुत पिट रहे थे. 4.90 उनका था, but it's just कि भाई how do India let it slip away 50 for no loss से. सुबह 50 for no loss से थे. At the end of the day आप 301 डेफिसिट में, लाइक बहुत लाइक वो परफॉर्मेंस बोल सकते हैं आप इंडिया की तरफ से. 2012 या 13 के बाद इंडिया इज गोइंग टू लूज अ सीरीज एट होम. दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट कि भाई 12 साल इनक्रेडिबल है. आई एम नॉट स्टिल टेकिंग अवे, मैं वो वन ऑफ दोज फैंस हूँ भाई कि एंड ऑफ द टेस्ट मैच तक मैं नहीं बिलीव करूँगा कि इंडिया हारेंगे. बट रियलिस्टिकली अगर आप एक रियलिस्ट के दिमाग से अगर सोचें तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये मैच हो चुका है. अगर फिर पिच फुट गया एंड 350 400 चेंज करना 2 दिन में. वी डू हैव द बैट्समैन, बट द बैट्समैन आर नॉट कमिंग थ्रू. एंड यस, न्यूजीलैंड डू हैव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, बट आफ्टर 12 इवन इफ वी लूज दिस सीरीज, 12 साल के बाद इंडिया अगर सीरीज हारी भी, तो अभी हारी नहीं है, लेट्स रिमेंबर दैट वन थिंग. बारिश कभी कुछ भी हो सकता है, लाइक यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. बट आई थिंक 12 साल के बाद इट्स एन इनक्रेडिबल रिकॉर्ड. इफ इंडिया डू लूज, अगेन लेट मी से दैट इफ इंडिया डू लूज, इट विल बी अ वेरी बिग लॉस तो ठीक है, बट ऑल्सो अ वेरी बिग विनिंग
क्या बोलते हैं अपनी स्ट्रीक 12 साल की स्ट्रीक कोई मजाक नहीं है भाई. बड़े बड़े टीम आए, बड़े बड़े टीम गए. इट्स फाइन, इट्स डिसेंट, इट्स अ हिकअप ऑन द रोड, यू नो, रोड बम्प पे. बट बीजेटी से पहले अच्छी बात यह है कि आपको अपने वीकनेसेस निकल के आगे कि भाई टर्निंग ट्रैक्स पे मे भी अपने बैट्समैन उतने काबिल नहीं है जितने हम सोच रहे थे शायद वो भी. बिकॉज श्रीलंका में भी आप देखो ये प्रॉब्लम हम निकल के आया था जब कौन था वो मेंडिस आके हमारे को खा दिया था, यू नो, प्रभ सूर्या एंड ऑल दैट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मे बी our batting is not up to the mark in terms of the spin department, and yeah, I mean India is definitely on the brink of loss, but again we're still not knocked out completely. We do have very good batsmen in Rohit Sharma, Virat Kohli, Jaiswal, but it does look a little difficult. 50 60 80 more runs अगर कल एजाज you know ये सब टेलेंडर के साथ मिला के 60-70 रन बन गए तो it'll be a little bit hard to bad. I'll just take a bit of comments. Mayank Yadav, Shivam Dube and Ryan Parag are also injured. Yes, all of these are injured. Ibrahim Bhai, Ryan Parag had a shoulder injury which is being recovered. Mayank Yadav and Shivam Dube. Again, this is what we have to talk about Mayank Yadav. मयंक यादव को आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई उसको डाल देना बीजेटी में सीधा. अभी वो इंडिया ए की सीरीज़ कोई नहीं जा पाएगा अगर वो इंजरी है उसके. तो मयंक यादव के बारे में काफ़ी चर्चे हो रहे थे, काफ़ी हो रहा था कि भाई मयंक यादव आपको लेके जाना पड़ेगा. बट ये रियलाइज़ करो कि भाई 150-160 डालने वालों की शोल्डर इंजरीज और इनकी जो इंजरीज है उनकी रिकवरी और ज़्यादा केयर करना पड़ता है. येस, इज 21 years old, इज ऑलवेज मोर टाइम फॉर हिम. लेट हिम डेवलप एट हिज पेस. डोंट पेस हिम. जल्दबाजी में उसको यू नो कंप्लीटली तोड़ दो मत, जैसा इरफान पठान कर रहे हैं. अब जल्दबाजी में आप उसको बैटिंग इतना दिए कि भाई बंदे की पेस ही रिड्यूस हो गई. सो आई थिंक जस्ट टेक हिम वन स्टेप एट अ टाइम. लेट मयंक यादव बी हिमसेल्फ, लेट हिम ग्रो इनटू हिज ओन शेल एंड देन वी विल सी. Ryan Parag, again, yes, decent all-rounder, T20 squad. I think he won't be going to the BJT anyway, so I think that's something. Kuldeep Yadav Mustafa is here with me. He's just joining me shortly, आराम से. या जैसा मैं बोल रहा था, सॉरी इंटरनेट इशू हो गया आपका, ये डाल दो. तो या तो मुस्तफा भाई, वन बाय वन आई टेल यू. इंडियाज टीम वर्सेस साउथ अफ्रीका. सबसे पहले सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप, विजय कुमार, वाइसक, अवेश खान एंड यश दयाल. ये टीम है आपकी साउथ अफ्रीका जाने वाली नवंबर 8 को. हार्दिक पांड्या नहीं है? हार्दिक पांड्या है. अच्छा, ओके यार, इट्स अ प्रीटी स्ट्रांग टीम. आई थिंक यही टीम यू नो खेल रही T20s इंडिया के लिए. आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड टीम, प्रीटी स्ट्रांग टीम. दे हैव अ गुड चैलेंज साउथ अफ्रीका में. ओवरसीज कंडीशंस देखना पड़ेगा वहाँ कैसा रहेगा. बट या आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दिस टीम. आई थिंक इट्स प्रीटी गुड. बॉलर्स आर प्रीटी गुड टू. एंड क्या मयंक यादव, शिवम दुबे विल बी unavailable for selection as they have injuries, and Ryan Parag will also not there because of an injury. तो हम यही बात कर रहे थे कि यू नो लोग बोले थे मयंक यादव को लेके जाओ उसको बीजेटी में खिलाओ, उसको यहाँ पे खिलाओ. मयंक यादव की उम्र के हिसाब से उसको आराम से खेलने दो. शोल्डर की इंजरी है, एंड अगेन आप देखो आईपीएल से ये प्रॉब्लम आ चुकी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस गाय माइट बी एन इंजरी प्रोन एसेट. वी जस्ट हैव टू वेट एंड लेट हिम ग्रो, लेट हिम डेवलप हिज मसल्स, लेट हिम, बोलते ना दूध पियो कैल्शियम बढ़ाओ, वैसे उम्र है अभी उसकी. लेट हिम जस्ट टेक एंड आल्सो व्हेन यू बोल दैट फास्ट यू आर गोइंग टू बी इंजरी प्रोन. तो इट्स हैव टू बी केयरफुल. इतनी जल्दी इन हिज करियर, लेट्स नॉट टेक हिम टू अ बीजेटी एंड गेट हिज माइंड लाइक एक्सपोज्ड टू समथिंग लाइक दैट. आई मीन सम पीपल कैन टेक इट. आई डोंट नो हाउ मच ही विल बी एबल टू टेक इट, बट लेट्स जस्ट वेट एंड सी. वी मेड अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ by focusing so much on the BGT that we forgot about the New Zealand series and they destroyed us. Yeah, they came to the home आके फोड़ के रख दिया and too much focus. But now I think squad आ गया तो we can talk about it. But which हम लोग नहीं सोचे थे कि obviously squad आने वाला है, because आप इंडिया न्यूजीलैंड के बाद अनाउंस कर देते. तो अगर ये सीरीज चलते हुए किसी को इंजरी हो गई तो obviously there is a lot of replacement option in this. One news that is in this, Mustafa, Kuldeep Bhai is not there in it too, and we were saying that you know he does have an injury that he's carrying since a while now, and I mean उन्हों नहीं बताया दुनिया को, but yeah, he does have an injury that is there. I think it's something to do with his hernia or something. So we still have to wait for an update from that. But yeah, ये है कि भाई कुलदीप यादव के पास maybe वो NCA में रहेंगे या कुछ है, but we'll come to know that later on in time. I mean, he should be in the squad. I don't know. Like, I would have kept him as the extra leg spinner. Yeah. But I guess who are the spinners? Ashwin Jadeja is there. And Sundar Kumar. Achha, theek hai. They probably went with the Washington Sundar because of the batting. But I would have liked to see him, because if you see Kuldeep Yadav in Sydney, in those conditions, Melbourne, he could be used over there. Bilkul. But theek hai. I think this is still a very good very good squad. I'm very happy with Nitish Kumar Reddy. Nitish Kumar Reddy, I think is you know, we need an all-rounder. तो उस हिसाब से I'm happy with that. Virat Kohli is there, KL Rahul, Shubman Gill, Sarfaraz. Yeah, he's there as well. So yeah, I think
It's a good squad, but if you're going to play like this, how you're playing over here, you're going to get wiped for 5-0. So we need चलो a better अभी आज का performance. दिन डिस्कस करते हैं. So I was discussing with everybody prior Yeah. to आपकी arrival, and I just want to know your thoughts on the day. Where do you think we lost the game? 54 no loss was at one stage, and today we're 301 trailing. Again, spin नहीं खेल रहे बराबर. Poor shot selection, not reading the delivery. Virat Kohli, whether it's Virat Kohli, Rohit Sharma, any of them, experienced players not stepping up. The youngsters playing one shot too many. If you saw today, I think after Kohli got out, even Ian Smith was saying on commentary, try to grind it out, try to thoda sa block it out a bit and then go for it. But they were just swinging the bat, all of them, and poor shot selection. Again, very poor. You cannot blame KL Rahul now. You cannot blame Rahul Dravid. You cannot blame anything. It's this team. And losing at home to New Zealand after 12, 13 years, losing to any team. I did not expect it in this series. आप रिस्पेक्ट तो करेंगे स्ट्रीक का लेंथ 12 साल का स्ट्रीक है आपका. अभी भी मैं तो बोलूँगा नहीं हारे. नहीं हारे बिल्कुल. हारे नहीं, अभी हार जब तक. बट अभी जो परफॉर्मेंस था, एटलीस्ट बैटिंग जो इंडिया की थी, आई थिंक इट इज बिन पोर. 250 260 ऑन दिस पिच, यू कुड हैव गॉट क्लोज टू दैट टारगेट. आप देखो पाकिस्तान कैसी बैटिंग करे. वो पिच इट वाज सिमिलर, राइट? लाइक मेरे को तो लिटरली वो अक्षय कुमार वाला सीन हो गया. ये उधर चलेगा, ये इधर चलेगा. वैसा पाकिस्तान 300 तक पहुंचे, इंडिया भी पहुंच सकती थी ये पिच पे. हम इतना बोलते हैं अरे पाकिस्तान को क्रिकेट नहीं आता, ये नहीं आता, बोलता है, बट दे बीन प्लेइंग मच बेटर क्रिकेट इन दिस टेस्ट मैच, whereas India didn't bat well. I think 250 260 bowlers did well, but the batting has let us down. Usually you cannot blame Virat Kohli has to take responsibility. He has an issue with left arm spin. He has an issue on returning pitches. Rohit Sharma आज तो वो भी नहीं था भैया, तो फुल टॉस पे आउट हुए उन्होंने. Yeah, but वही है, like left arm spinner angle, he's misreading the ball. Rohit Sharma missing the line of the delivery. आपके कोने दूसरे शुभमन गिल सेट होके आउट, या जायसवाल इतना बड़े like centuries मारे इंग्लैंड के against, again poor shot selection. All of them I think cut, because we have a habit of scapegoating. This time it's all 11 players. There's no KL Rahul. There's no KL Rahul. अब कौन क्या बोलेंगे अब? Like KL Rahul नहीं था. It's nothing to do with KL Rahul. It's these individual batters. I think very very poor. I'm not happy with that performance. It's cricket though. You win. I think this is a good learning experience. And now the WTC final, जो Lords का हम लोग plan कर रहे थे, we'll have to hold our horses now. It's a tough route now to the WTC final. It's not going to be easy. I mean, South Africa वहाँ से आवाज़ करी. Sohail Ibrahim भाई, I'm pretty sure happy with a bit of that fact कि भाई India is on the brink of defeat and stuff. So Ibrahim भाई, hopefully South Africa. Even Bavuma is also going to miss the second test. So that's also one news. But टॉम लेथम यारो क्या बैटिंग करा. आई थिंक फैंटास्टिक. यू कैन से कि भाई 100 की लीड थी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करने आया. बट देखो जब आपके बैट के पास रन्स नहीं आते ना, एज अ बैट्समैन आप ऐसे भी अंडर कॉन्फिडेंट है, तो मेरे हिसाब से. सो आई थिंक कमिंग इन एंड कमिंग विद एन अटैकिंग इंटेंट, he was putting the attack to the spinners and stuff, and he managed to get quick runs which added pressure on Indian bowlers. तो वो बहुत fantastic, and certain shots बहुत प्यारे खेला उन्हें, like point के बीच में and stuff like that. और भाई मिचेल सैंटनर जो bowling करा आज, incredible. तो भाई गोरा अश्विन था, sorry गोरा सुंदर था. Yeah, I mean outstanding bowling. His variations were outstanding. जिस तरीके से उन्हें like pace को भी vary कर रहा था, उसका trajectory जबरदस्त था. He was unplayable on this pitch. Incredible bowling from him. And New Zealand have been outstanding, man. मुझे लगता है पाकिस्तान ये टेस्ट बिल्कुल भाई बिल्कुल, लाइक जिस तरीके से पाकिस्तान को हम लोग एक्चुअली क्रेडिट करने चाहेंगे कि भाई द वे दे केम बैक. बोलते ना भाई, इतनी अपनी मजाक उड़ गई थी बेचारों के फ्रॉम द बांग्लादेश सीरीज के. भाई दे लॉस्ट टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बांग्लादेश वन इन पाकिस्तान. उसके बाद आप फ्लैट विकेट दे देते हो, उसके बाद दैट इज देयर, दैट्स व्हाट हैपेंड. बट coming back from that, dropping Babar Azam, dropping Shaheen and dropping Naseem, and then doing something that you're not used to doing, defying all the odds, because that is all that was left. It's a very big credit to Shan Masood and the PCB selectors. Like वो तो देना ही पड़ेगा. But वो क्या है, दो जिंदगानी दो जवानी, वो जो भी है, गाना भूल गया हमें, लेकिन नोमान अली साजिद खान ब्रो, ही रिमेंबर दीज टू नेम्स ब्रो. लाइक 37 के एक है और एक 31 32 का है. आके नक्शा बदल दिया रहा पूरा. लाइक मजाक से हटके वो दो बॉलर्स जो डाल रहे वो दो आप बोल सकते हो वो सिर्फ भाई अश्विन जडेजा भी वही करते. लाइक दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज, राइट? या इज इंडिया अबाउट टू गेट क्लीन स्वीप्ड एट होम? देयर इज अ चांस, मैन. आई मीन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम गोइंग इनटू लाइक बीइंग इन दिस पोजीशन इन द सीरीज. आई थिंक दे हैव बीन आउटप्लेड इन एवरी डिपार्टमेंट फ्रॉम बैंगलोर टू नाउ. बैंगलोर में आप बोले द कंडीशंस फेवर्ड न्यूजीलैंड, यहाँ पे इट्स टर्निंग, इट शुड बी फेवरिंग यू, बट यू बीन आउटक्लास्ड इन एवरी डिपार्टमेंट, वेदर इट्स स्पिन बॉलिंग,
फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, आप देख लो जैसा फैज बोल रहे थे टॉम लेथम लोग, they've been batting, this is the third innings. Second innings means it was better pitch to bat on. आज सुबह में जब आप बैटिंग कर रहे थे, it was a better pitch to bat on. ब्लंडल का हाईएस्ट स्कोर 30 है, याद रखो, इंडिया में हाईएस्ट स्कोर 30 है उसका. आज 30 पे रिवर्स भी पैसा करा कि बचपन से रिवर्स. और भाई अब विराट कोहली, he has struggled on these pitches. Why is, I don't understand. Like, he's done amazing in India, outside of India. He's done great, like, in swinging conditions. But turning wicket pe, he's always struggled. I have not seen like 100 from him on a turning pitch. Do you think we've ignored the batting of अपनी बैटिंग, क्योंकि अपने स्पिनर्स इतना बूम्बास्टिक डाले कि अपन अपनी बैटिंग देखना ही भूल गए? नहीं, बैटिंग तो देख रहे हैं हम लोग, फेल्स हो रहे, मगर देयर इज नो इंप्रूवमेंट. अब आई डोंट नो, लाइक वो फेल्स कॉल आउट नहीं होते, वो छुप जाते, बोल रहा हूं मैं, बिकॉज़ ऑफ द स्पिनर्स इन अटैक. वैसा बोल रहा हूं. 100%. बट हम इतना हम जीत गए पे थे कि हम यही नहीं देखे कि घर में हमारी बैटिंग नहीं. क्या होता था मैं आपको बताता हूं, रोहित शर्मा ने तो जडेजा अश्विन निकालते थे आपको ये सिचुएशंस में, या कभी-कभी पत निकाल देता था, राइट? अभी कोई नहीं निकाला आज. मैं वही बोल रहा हूं. मगर कौन है बंदे? शुभमन गिल, विराट कोहली, ये जो कोर आपका मिडिल ऑर्डर है नहीं चल रहा. केएल राहुल, रोहित शर्मा फिर भी निकालता था टर्निंग विकेट पे, बट ये तीन मिडिल ऑर्डर में नहीं निकाल रहे थे, राइट? दीज थ्री, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली. नाउ केएल राहुल इज गॉन. नाउ योर नेक्स्ट टारगेट इज विराट कोहली. इफ इज नॉट गोना स्कोर, देन व्हाट्स गोना हैपन? ऋषभ पंत पे गाड़ी आ जाएगी. नहीं, ऋषभ पंत तो निकाल रहा था, लाइक ही इज डन इट ऑन स्पिनिंग विकेट्स. हु इज इट? शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल. अब नेक्स्ट टारगेट आपका ही बंदा है भाई, विराट कोहली. यूजर तो बोल दिया लाइव पे, क्या व्हाट्सएप पे. आप लोग भी कमेंट्स में बोलिएगा विराट कोहली के बारे में क्या लग रहा है आपको. लाइक, डू यू थिंक, आई मीन, आई एम नॉट गोना ड्रॉप हिम एवर इन माय लाइफ, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट योर थॉट्स ऑन विराट कोहली एंड एनीथिंग. डू यू थिंक इंडिया शुड आल्सो ड्रॉप बिग नेम्स इन टेस्ट लाइक इट वर्कड आउट फॉर पाकिस्तान? If I said he wouldn't, I said yes. I wouldn't, because again, see, who would you bring in place of Virat Kohli? Like, देखो, Virat Kohli, again, you could say he got 70 in Bangalore. अब वो मगर होने I'm not taking this as an excuse, because KL Rahul जब मारा 50-60, अरे वो तो मैं तो कानपुर में लिया ना उसको, वो तो लाइट है, वो तो लाइट है. But do you feel that, like, I feel like, to be very honest with you, if you're going into the the third test match, of Australia, okay, and these guys have not performed, you have to. Then see, I'll tell you one thing. No, I wouldn't. Australia is a different ball game. Like, but I wouldn't drop KL Rahul or Virat Kohli right now. नहीं, मैं आपको सुना, मैं दोनों को खिलाता हूं. मेरे नजरिए से बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं अपन, इंडिया में नहीं खेल. ऑस्ट्रेलिया में कौन है यार अपने टीम का बेस्ट प्लेयर? यू नीड विराट कोहली. Yeah, but he also needs to step up. But my thing is, अब ये शेन भाई ये सब बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे कि केएल राहुल, सो दिस इज द प्रॉब्लम. उसको क्यों लेके आते हैं वापस? बिकॉज़ बंदे खेल रहे नहीं. जब भी कौन जा रहा भाई, इज गोइंग टू बीजेटी, कोई बंदा खेल रहा नहीं उसकी जगह में, क्यों नहीं खेल रहा? नहीं, मतलब बहुत वियर्ड है. अगर आप देखो कि भाई 54 नो लॉस से लेके यू आर जस्ट नाउ इन, एंड न्यूजीलैंड इज नॉट अ कंट्री दैट, लाइक साइमन डोल आज बोल रहे थे कमेंट्री के, भाई मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे पिचेस हमें न्यूजीलैंड में मिले, ताकि हमें ऐसी क्वालिटी के हमारे जो स्पिनर्स हैं हमें मालूम होना. उनको खुद ही नहीं मालूम कि लाइक मिच सैंटनर वाइट बॉल में ही इज फैंटास्टिक, रेड बॉल में ज़्यादा खेला नहीं. इट्स लाइक 20th या 25th उसका टेस्ट मैच है करियर का. तो आप देख लो. एंड ग्लेन फिलिप्स, मैन, पार्ट टाइमर है, लेकिन कैसा डाल रहा है, एजाज पटेल से बेटर डाल रहा है. बट जोक्स असाइड, आई थिंक, लाइक, लुक, राइट नाउ दिस इज अ ह्यूज reality check, setback, right? A huge reality check. I think you have to back certain players, because these are the same players who kept maintained this record over the years, right? Whether it's Virat Kohli, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, Ashwin, Jadeja, you still have to back them. I think, but now they need to pick up their game. They need to show improvements. Virat Kohli has to step up. Rohit Sharma has to step up. Oh, whiff of inspiration होना. Yeah. We need that. I think it's fine to lose the series at home, because we haven't lost in a long time. But, like, that doesn't mean you can't improve. You have to improve. You have to. आप देखो, आज खुद ही सवा भाई साउथ शकील की इनिंग्स देख लो यार, इंस्पिरेशनल इनिंग्स है वो एक्चुअली. भाई पूरी टीम आपकी चली जा रही थी, आप खड़े, आप 134 बनाए, आपके साथ कौन बैटिंग करे भाई? साजिद नोमान होना तो बैट के साथ भी नहीं छोड़ रहे भाई. तो see, I'm not saying expecting Indian tail. Ashwin has already bailed us out once in the Bangladesh series. Jadeja as well. Those two have done their job. Like, I mean, yes, Jadeja की batting you could say is a little bit iffy nowadays and stuff like that. But पॉइंट मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई एक मैच से पाकिस्तान का वो कुछ, हम वो नहीं बोल रहे, बट तरीका ऑफ प्लेइंग, द स्टाइल ऑफ प्ले दैट जस्ट दे इवॉल्व विद इन अ फ्यू वीक्स. इंडिया का यहाँ पे यार बैटिंग स्पिन पे बहुत तकलीफ हो रही. श्रीलंका में भी जाके तकलीफ हुई आपको. उसके बाद कहीं ना कहीं हम अश्विन किसको तकलीफ हो रही? इंडिया को. किसको पर्टिकुलर? विराट कोहली को हो रही है. ये प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आ रहा. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ आई थिंक ही इज अ क्लास बैट्समैन. आई डोंट भाई लेफ्ट आर्मर का आप लोग घर पे बैठ के, हम लोग घर पे बैठ के अगर अपन डिसाइफर कर दे रहे, बट ताइजुल इस्लाम आके उसको उखाड़ दिया था बांग्लादेश के सीरीज में. That's what I'm a bit concerned
concerned about. और कौन था लेफ्ट आर्मर उन्हें इंग्लैंड के I'm quite concerned about that because the thing is, he should not like it should not be consistently happening for so long, right? That's one particular guy I'm a bit concerned about because I think he's an outstanding batsman, but there is a glaring weakness against the spin where like I just hope that he needs to improve that. And then Rohit Sharma, the swinging delivery, man, this is also a यार वो problem. तो ऑस्ट्रेलिया में तो और भी Yeah, हमारे okay, लवेश go. भाई थैंक यू फॉर जॉइनिंग लवेश said in all the conditions you can even drop punt there then Rohit Sharma should be dropped. Pujara and Rahane could do better here. But again, you're going to go back to Rahane and You have to Pujara. look to the future. You can't keep going back when the time is wrong, right? So I think it's just like you just got to wait and be patient with your team. And what Mustafa Bhai always tells me with my fantasy Premier League, that you've got to also be patient with the team. See, Australia will be different conditions. Your best bet is Rohit Sharma or Virat Kohli because that's the experience. I don't expect Sarfaraz to come and smash it in the first BGT, but I want to be surprised if he does because we know what talent he has. But again, the condition that he grew up in Ranji is not similar to in Australia. So you need a KL. Yeah, and also bowling, I was disappointed today. You know, spinning. बिल्कुल You know, भाई like आप New Zealand best batted spinners in the beautifully, world है मगर आपके अपने पास spinner like you know. Washington सुंदर को आप लेके आए भाई वो बंदा तो कर लिया अपना काम. It's the batting that has let you down. And also Ashwin Jadeja, man, Ashwin didn't bowl well, bro. Ashwin को बहुत बुरा मारा. Yeah, अभी like started he didn't bowl well. Like I did not. This whole series is not bowled well. उन्हें एक दो विकेट लिया. फिर भी मुसावा भाई like उनकी bowling कर दी 259 न्यूजीलैंड को आउट कर दिया. नहीं मगर 150 करना था. Like वैसा रहना like अश्विन जडेजा भाई इंडिया में like सही है मैं आपकी बात मानता हूँ. और तो ओके ठीक है आप क्रेडिट भी करो. आप 250 बोले राइट मान ले तो मगर ये थर्ड ये बिल्कुल ये तो भाई मैं खुद बोल रहा हूँ वाशिंगटन सुंदर जब तक नहीं आ रहा विकेट गिरी नहीं रही भाई. was getting slapped bro like the first 4 overs I think 23 रन दे दिया था. अगर आप डिफेंसिव फील्ड क्यों डाल रहे हो फर्स्ट इनिंग्स में आपके पूरे लोग बाउंड्री पे क्यों हैं भाई आप अटैकिंग फील्ड डालो आप यू नो बाउंड्री पे लोगों को खड़ा दिए आप दूर खड़ा दिए तो ऑब्वियसली दे आर नॉट स्टूपिड डेवन कॉनवे these guys know how to play test cricket. Virat Kohli got bowled on full toss he deserves some rest. Lavish boy बोल रहे हैं. Yeah, I mean Virat Kohli has been failing. I agree. In Indian conditions, you can drop him in the Mumbai test. Go for it. I'm 100. But in Australia, I will never drop. Like I'll drop him in the next test, but I won't drop him in Australia. Is what I'm saying. Santner and Phillips have been New Zealand go-to spinners in this series, and even in the home conditions, they closed this. 2 against South Africa and Australia. Yeah, उन्हें ग्लेन फिलिप्स तो यहाँ पे अभी श्रीलंका में भी 4-5 विकेट लिया था एक इनिंग में मेरे को याद है. I think he's bowling pretty well. Him and Santner have done absolutely brilliantly, man. In this match in particular, Ashwin wasn't again good length. Yeah, man, he was not. I don't know what the hell he was doing. Like seriously, like I expected much better from him because Ashwin is like the king in India when it comes to spin. And again, देखो, you don't need to bowl the fastest on this pitch. अगर आप pitch का देखो, pitch is doing everything for you. You just have to put it in the right areas, not too fast, moderate speed. You don't need to go all out in the speed. Yeah, नहीं बिल्कुल like ठीक है. भाई फिलिप्स का भी आप देख लो, he's not, but he was pitching it right, but कैसा टप्पे पे निकल रहा था उसका. सैंटनर का भाई सैंटनर तो एक लाइफ दिया अपने जडेजा को इनसाइड है जो लग के कैच हुआ. तो आई मीन देखो एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू एंड अश्विन बैन ही इज अ cricket encyclopedia. I think he should have read it better. And but yeah, देखो look, it's part of the game. You're going to lose series. You're going to lose at home. It's been a long time. I'm facing defeat right now. Facing there's a chance. I mean, I will like I'm one of the absolutely there is a chance. I'm not saying that, but I think it's this very is where आपकी cricket की quality नहीं. अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर जीता है right, then like I will feel like you know going to that BGT and वो भी मुंबई टेस्ट मैच भी exciting हो जाएगा. Purijit bhai Lindal saying hi sir. Karthik bhai says worst day ever for ICT fans. I mean it is the worst day, but also like border Gavaskar का थोड़ा news आ गया तो थोड़ी excitement बढ़ गई रात में. Hi Phil Salt is from Pakistan. Phil Salt भाई कैसा वाला पाकिस्तान से? मतलब उन्होंने बोले पाकिस्तान जीतने वाले हैं कल तो लग रहा है वो तो doesn't mean उन्होंने पूरे बच्चा पैसा करता भाई तुम जॉनी सिंह लगते हो. जॉनी सिंह अच्छा क्या बात है. और आपको कैसा मालूम जॉनी सिंह कौन है? ये भाई बच्चा कैसा पैदा भाई बच्चा कैसा पैदा होता भाई आप कैसा हुए मालूम करके आ जाओ. What are your thoughts on India losing to Afghanistan? Man, what a match. मतलब सदीकुल्ला and the other guy bro जो ओपनिंग करे अफगानिस्तान यहाँ भाई 137 for no loss. They completely मैं उतना ही देखा उसके बाद देखे नहीं बट उसके बाद देखने के लायक भी नहीं थे. No, I wish I saw because Afghanistan, I mean, emerging team. I mean, I'm really happy for them. I was expecting India to be in the finals against Sri Lanka. लेकिन Afghanistan they batted really well. Faiz mentioned the openers. I watched the first 10-15 overs. Like जितना आप देखो उतना मैं देखा बट जो अपन देखे भाई जो लंबे उतार रहे थे वहाँ ग्राउंड पे ओमान के गाड़ियों में यू नो पूरे पार्किंग लॉट से गाड़ियाँ निकल जा रहे थे तब बुरा मार रहे थे. What are your thoughts on what do you think of our media will troll India as they trolled Pakistan? Clearly media का काम है भाई वो तो उनका
That's a good question. I don't know, man. They like Clickbait, bro. I mean, I that's a good question because जब बाज अपने लोग वहाँ पे ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे लोग यहाँ पे देखते हैं, like I don't know, but I don't know the answer to it. But all I can say is that matches के बोल सकते हैं, when Pakistan don't do well, we'll tell you. When India don't do well, we'll फेयर tell you. असेसमेंट Like, रहना चाहिए, मतलब ट्रोल ठीक है, आप अपना अलग अलग अपने अलग अलग opinions है, like it's that's not a problem. I mean, see, भाई, if you troll it, you do whatever you. I 12 can't साल stop के you. बाद आप हारे, वो तो दिमाग में रख के चलो। Now, भाई शामी किधर है? शामी देखो भाई एनसीए में है एंड ही इज वर्किंग ऑन हिज नी, ऑल ही कैन डू इज ट्राई टू बी फिट एंड ऑलरेडी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि भाई वी विल वांट हिम मे बी आफ्टर द थर्ड टेस्ट। तो अभी शमी का इमीडिएट एंट्री होने वाली थी नहीं, सो जो भी ये आपका क्या बोलते हैं टीम है, दिस इज गोइंग टू प्रॉब्ली देयर कुड बी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन going forward. You don't know if they need Shami, they'll call Shami, they'll probably release someone. So anything is possible these days. And traveling reserves में भी नहीं है लेकिन Shami, but Shami का घुटने में एक इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से उनको नहीं रखा गया है। मुकेश कुमार, नवदीप सैनी and Khalil Ahmed are also there in the traveling reserves. I mean, that's good. Don't you think the squad was released to distract from India's failure? If India loses tomorrow, hopefully there will That's be. a very good point. Actually, But वही है कि IPL कभी आ जाता है उसके बाद. अभी हाँ वही है. That's the next thing to look forward to. So yeah, there will be distractions. I think fair enough you said that, but there's nothing we can do. Like अब वो लोग announce कर रहे तो कर दिया. But of course there should be criticism. There should be कि भाई यहाँ से कैसा improve करना है, because ऑस्ट्रेलिया जाके अगर आप clean sweep होंगे तो और बुरा हो जाएगा. फिर WTC को भी आप bye bye बोल दो. तो now basically they need to try and win this test match. And then they need to try and go to Bombay and win. If they don't win this, at least win in Bombay. And फिर उसके बाद BGT के लिए they have to prepare wickets के लिए, pitches के लिए, and अगर आप जाके 5 दिन पहले जाके बोलोगे कि भाई हम जीत जाएंगे तो then मुश्किल हो जाएंगी आपकी. Santner does not get enough credit or chances. CSK or NC, glad he is getting noticed. I think CSK में a couple of years ago he was their prime bowler. But yes, he's a very under the radar bowler for sure. I mean, again, typical New Zealand attitude, calm, composed, आके अपना काम करके घर चले आता. Red ball format में उतना है नहीं उनका, 27-28 टेस्ट से, because they play majority at home or they play in conditions which don't require spin in Sena. But if you look at the other way, in white ball he's their best player, bro. So I think he does get, but not to the levels. Like he's not a very अम्मा इतने विकेटा निकाल लिया टाइप गाया. So I mean ठीक है मिचेल सैंटनर. But he has, if you see even what he's developed is a lot of control, right? Like even in T20s उसको back करते हैं उन लोग, especially subcontinent conditions. कैप्टन हो गया भाई. Yeah, like तो उन्हें like he's developed a lot, and I think he's a brilliant bowler, man. He's been outstanding. I feel bad for Ruturaj Gambhir behind this. ऋतुराज को हाँ मौका दे सकते हैं, मगर अभिमन्यु को ने ईश्वरन, he also deserves a spot, I think, as a backup opener. He's done really well. Pecking order अगर आप देखो, Ruturaj should go through, in my opinion, because Ruturaj has been there over Kohli, over Ishwaran, but Ishwaran has done really well as well. In the Duleep, like कब से मगर ऋतुराज तो अभी ईश्वरन कब शुरू करा? Been playing Asian Games को गया, वहाँ से आया. ईश्वरन जाके मतलब गायब ही हो गया था ना. ईश्वरन अब हाल में दुलीप में गायब कौन करे, इन लोग ही तो करे, उसको लेके आया. लाइक ऋतुराज को तो इन द फ्रेम लाके जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने वहां परफॉर्मेंस दिया. आई थिंक इट्स लाइक ठीक है, आई आल्सो एग्री विद दैट, बट लाइक इफ ही डजंट गो आई वुड टेल यू पलटा के ईश्वरन आल्सो डिजर्व. सो लाइक आई थिंक बोथ ऑफ देम डिजर्व अ चांस. हां, आई फील बैड फॉर ऋतुराज हो गया यार. नीतीश रेड्डी की जगह अक्सर को लेके जा सकते थे. नहीं मीडियम पेस होना चाहिए. हार्दिक को भी ले लेते, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मगर खिलाना चाहिए. नहीं ठीक है, बट वी नीड स्टेबिलिटी इन लाइक एटलीस्ट वो बैलेंस के लिए. आई थिंक वी नीड अ मीडियम जेन्युइन ऑलराउंडर, एंड ठीक है एटलीस्ट वी कैन डेवलप समबडी, राइट? कितना आप एक ऑलराउंडर पे डिपेंड करेंगे? आई वुड हैव टेकन हार्दिक पांड्या टू बी ऑनेस्ट एज वेल, बट आई थिंक वी नीड टू टेक, यू सी दे डोंट हैव कैमरन और ये वहां नीतीश को कैमरन ग्रीन भी नहीं, अक्सर भी डिजर्व करता है. नहीं अक्सर तो डिजर्व करता, बट आप कंडीशंस देख के करना पड़ेगा, राइट? वैसा तो कुलदीप भाई भी डिजर्व करते हैं, अक्सर भी डिजर्व करता, बट आप कंडीशंस देखो. Washington Sundar has done well, so he's going. But I think looking at the conditions, you'll need a fast bowling guy who can bat. बिल्कुल. I mean, yeah, that's a fair point. And again, conditions को नजर रखते हुए तो maybe Nitish Reddy again देखो अभी इंडिया एक ही टूर को जा रहा है. Let's see what he does over there. And
उसके बाद ही असेस करेंगे भाई। बहुत जल्दी अपन लोग मयंक यादव इन लोग बहुत जल्दी घुसा दे रहे। लेट्स जस्ट गिव अ ब्रीदिंग स्पेस सबको। एकदम से आप पूरा क्रिकेट नहीं खिला सकते, राइट? वैसा बोलता आप रिंकू सिंह को भी ला लेंगे, उन्हें मार सकता नहीं, लाइक इट डजंट वर्क लाइक दैट। वी जस्ट नीड टू स्लोली ट्रांजिशनल फेजेस में लेके आना है हर फॉर्मेट में। तो तीनों फॉर्मेट में घुसाओगे देन विल हैव अनदर केएल राहुल स्टोरी एवरीवेयर। बेचारे उसको क्यों घुसा रहे हैं? उसकी गलती तीनों थोड़ी फॉर्मेट है। खिलाए वो गलतियां फिर हो जाएंगे। वो तो विराट कोहली को खिला रहे हैं वेयर इज इंडिया नंबर 1 आई फील बैड मैन। श्रेयस अय्यर को तो लाइट ही ले लिया भाई। श्रेयस अय्यर को तो गायब ही कर दिया। he had a problem with the short ball. I don't think so. He'll have a problem now in Australia. India are looking at the situation where they will need to win 4-1 BGT or 5-0 now to qualify for the WTCI, and that is going to be a difficult Oh task, shit, man. Like, That's difficult. going to be a Yeah, difficult that's task. extremely difficult. I think. Do you think they underestimated New Zealand? Uh, India like थोड़ा like अरे I think we all did. हल्के में ले लिया। We all did. I did. You did. आप तो बोल रहे थे याद है श्रीलंका में क्या टीम है? अब बोलेंगे नहीं यार। Even I did. Even I said कि like we should beat them 2-0, 3-0. We all did. So of course they will not come out and say कि हम लोग underestimate करें, मगर थोड़ा बहुत तो था होगा यार like. If India loses this test match, they need send this team to Australia a tour that begins on 31st October, and Uttaraj A team should play third test against New Zealand, in my opinion. What do you guys think? Basically, send this team which is going to the BJT to India to play Australia. That's a very good idea. But I like a very good idea. I would do it. But yeah, but like I don't think that's going to be possible. Like you can't just पूरे टीम को उखाड़ के। What do you guys think? He's saying. What is your opinion? I mean, yeah, definitely. Yeah, I think I would do it, bro. मुझे लगा कि गैरी कर्स्टन और हार्दिक पांड्या स्ट्रीम कर रहे भाई। आँखें साफ करके देखो, सही दिखेगा खिदर भाई। एंड आई थिंक जस्ट अरे मैं तो मियाँ खलीफा पे चले आ रहे भाई साहब, बहुत हार्डकोर एडिक्ट दिख रहे हैं। Sri is slowly becoming a dark horse. Should watch out for them. Yeah, definitely. I mean, they've been fantastic at home, but they're only playing at home right now. It's not like they're playing anywhere else. I think I can't believe, man, series. from this situation, if India doesn't make it to the WC final, it'll be like sad. Yeah, it'll be sad. Like Lords पे आधे टिकट ना। तो मतलब अभी चांसेस साउथ अफ्रीका को भी है, श्रीलंका को भी है, ऑस्ट्रेलिया को भी है। सबसे डिसअपॉइंटिंग लेकिन इंग्लैंड है यार। इंग्लैंड इतना टेस्ट खेल के भी नहीं जीतते। लाइक दे आर द वंस हु मेड क्रिकेट एंड दे डोंट गेट टू द फाइनल ऑफ WTC। या इंग्लैंड आर शॉकिंग। ज्यादा टेस्ट खेल के भी आप नहीं जीते तो क्या ही फायदा। Have you seen the joke going around after Butler was ruled out of the ODI series against West Indies? And no, but bro, Faz, if India don't make it from here, I'm sorry. Salt and pepper opening for bad. I'll be very depressed, man. अगर इंडिया यहाँ से like you know, आप देखो they've been first for how long? The last like 7 months. Yeah. It'll be crazy, man. Akshar can also play as a pure batsman. Very underrated. Yeah, I mean Akshar can, but do you really need a proper batsman in an Akshar Patel when you have a majority other bulk of talent, right? You have a KL Rahul there, you have a Virat Kohli तो छोड़ दो, you have a Sarfaraz who you want to give a chance, right? Like फिर सरफराज को नहीं, आप बोलेंगे सरफराज को क्यों बिठाए? Akshar Patel does deserve, given the longevity. I completely agree, but again you got to pick and choose your battles मेरे हिसाब से. But let's see, you never know. इंजरी आ गई, maybe अक्सर को घुसा लेंगे. Let's see अभी आगे जाके क्या होता है. Ongoing test review करेंगे अभी साहिल भाई. भाई Pat Cummins said pitches would be like bushels for BGT, green pitches. Then अब वो भी होम एडवांटेज लेंगे. हाँ बिल्कुल भाई, उन्होंने दोनों हाथ से लेंगे भाई, सामने पिच्चे से लेंगे. जो फिल सॉल्ट बोल रहे भाई उस हिसाब से ही लेंगे. तो आई थिंक यही है कि they will make it a very spicy pitch. They will make it interesting for their own advantage. I mean, देखेंगे आगे क्या होता है. मुस्तफा क्या बोलते हैं? Yeah, they will definitely, because Australia want this more than anything right now. उन लोगों को इंडिया को हराना है at home, because दो सीरीज 2 टूर्स हो गए जहाँ पे इंडिया जाके जीती वहाँ पे. So I think 100% they will make the pitches spicy. They will make it as hard as they can for India, as tough as possible, as difficult as possible. Yeah. So yeah, it is going to be a big challenge. But let's see, man. Look, at least this is a wake-up call. Now India have to be more motivated. They need to go and. आप न्यूज़ सोचो, अभी ये टेस्ट मैच चल रहा है, बीजेटी की स्क्वाड आ गई, अभी इंडिया साउथ अफ्रीका आ गया. अब आपका ऑक्शन में कौन जा रहा है वो मैसेज चल रहे होंगे आपके कि भाई तू कितने में आ रहा, मैं कितने में जा रहा हूँ, तू जा रहा ऑक्शन में, मैं नहीं जा रहा ऑक्शन में. लाइफ एज एन इंडियन क्रिकेटर राइट नाउ इज लाइक 24/7 फोन पे बस. लाइक आप कहाँ जा रहे, मुंबई इंडियंस का क्या चल रहा है, गुजरात टाइटंस का क्या चल रहा है, सनराइजर्स का क्या चल रहा है. लाइक इट्स difficult period to focus, I think. So
And हर it's जगह दिमाग बढ़ेगा. look how life changes so fast, man. Like दो हफ्ते पहले we were praising Indian cricket, criticizing Pakistan cricket. Now we completely Yeah, I mean, the tables Pakistan have तो भाई turned. next level. I think Pakistan बेहतरीन you've cricket got खेल to रही. just applaud. Like Yeah. they kept their calm and they just focused through. And Yeah, but and, this is what it is. Like you needed to make a revolution in the team and you did exactly that. You changed the pitch. सबसे बड़ी चीज आपकी pitch and आपको थोड़ा बहुत मालूम कि आपके spinners अच्छे हैं. Bro, if I can tell you that sitting miles away, Yeah, 100%. then how can they not tell? Like everybody knew this, not just me. Everybody knew. Just change the pitch. उन्हें ऐसा दिखा है कि भाई अपने पास नहीं है स्पिनर है, अपने पास मेरे को तो वही दिखा कि भाई इनके डोमेस्टिक फॉर्मेट में प्लेयर like, but the thing is, like, you have to play on the opposition. You have to play on their skills. You can't just play safety first cricket, right? So now they're playing attacking And if you're cricket. trying to look at going to a WTC, I mean, yes, you might laugh, far-fetched है उनके लिए, but I'm just saying in a context of a year of WTC format, भाई तुम फिर जीतने से ही फाइनल में जाओगे ना, तुम ड्रॉ करके कैसे अब फाइनल देखो में इंडिया हार रही, राइट, वो विकेट्स बना के, बट आई स्टिल टेक दैट बिकॉज द गोल इज टू ट्राई एंड विन, नॉट ड्रॉ द टेस्ट मैच. आप हार गए उसमें थिंग, बट एटलीस्ट आप जीतने जा रहे हैं, राइट? लाइक दैट्स व्हाट, एंड दैट नाउ दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग. इवन इफ दे लूज दिस मैच, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आई थिंक पाकिस्तान हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस, done fantastically well. And yeah, England will criticize Ben Stokes, we're going to criticize Bazball. सबसे बड़ी बात भाई उनके कैप्टन को कॉन्फिडेंस के भाई उनकी नौकरी तो रहेंगी नहीं, तो भाई आप कैप्टन नहीं दिमाग आपका खराब. but इनका ये अच्छी चीज है that they're not afraid to lose either. England also play their style, they'll also go and attack, and if they lose, they lose. It's okay. I'm a इन्हें पलटा के वो चेंज करते रह रहा प्लेयर ना. Do you think PCB should select Sajid Khan and Noman ODI squad for Australia series or stick with Shadab and Nawaz? I mean, at least like based on this, I don't know how the limited overs bowling is. Based on this, you can definitely consider them. Why not, man? They've done unbelievably well. It's been brilliant. Yes, the pitches will be different in the white ball format. वहाँ पे ball will be different as well. You know, the off spinners don't get as much purchase in the limited overs, but why not? You can definitely look at them. Yeah, done, Karthik bhai. We've done that. Sahil bhai had asked to review again the ongoing. We are doing that as we speak. I mean, India का तो हम क्या ही बोल सकते हैं, आप खुद असेसमेंट लगा लो कि भाई इट्स जस्ट बिन अ हॉरिफिक सीरीज फॉर देम. बैंगलोर में अगेन देखो, आप बैंगलोर का भी आप लोग बोल सकते हैं कि भाई नहीं बैंगलोर में क्यों खिला है, वहाँ पे खिला, ये नहीं भाई, आप प्लेयर्स लो लेवल इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स है. यू हैव टू बी, जो भी आपको सिचुएशन फेंका जाता आप खेलना ज़रूरी है आपको, राइट? ओवरकास्ट रहने दो, बॉल मूव रहने दो, कुछ भी रहने दो, यू हैव टू ग्राइंडेड. आप रह रहे नहीं पिच पे, लाइक आप पिच पे इतना रह भी नहीं रहे कि आपका बॉल पुराना हो जा रहा, लाइक यू नो, ताकि आप ओल्ड बॉल को तो भी आप थोड़ा यू नो और मार के चंबू कर सकते हैं, लेकिन आप ठहर रहे ही नहीं, आप रुक रहे ही नहीं, आप मेंटल ग्रिट ही नहीं बता रहे, तो लाइक आप क्या ही. एंड न्यूजीलैंड का मैं आपको एक चीज बोल रहा था, वो टाइम पे भी उन लोग क्रिकेट ज्यादा खेल रहे नहीं थे. T20 में दे वर अंडर कुक्ड इन द वर्ल्ड कप, अगेंस्ट श्रीलंका दे वर अंडर कुक्ड. दे स्टार्टेड डेवलपिंग विदाउट केन विलियमसन. उन लोग आके जो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, इट शोज दैट यू नो दे हैव अ सिस्टम गोइंग, दे अंडरस्टैंड एंड दे प्लान्ड वेल एज वेल फॉर इंडिया. उन लोग को मालूम है भाई ये बैट्समैन को ऐसा करना है, वो बैट्समैन को ऐसा करना है. अब रीजन मेरे को ऐसा जो दिख रहा है, आपके जो स्टार प्लेयर्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, एंड देन यू कांट एक्सपेक्ट योर लोअर ऑर्डर टू ऑलवेज परफॉर्म. यू नो, Jadeja and Ashwin have bailed them out on numerous occasions. Sarfaraz also has batted well in the recent past against England and thing. I think the main reason is आपके जो स्टार परफॉर्मर्स है, रोहित, गिल, कोहली, इनके रन नहीं आ रहे, तो इट्स बिन टफ इन दिस सीरीज 100%. 46 ऑल आउट and then 150 all out. It's not been good enough. The batting, bowling as well. Ashwin has been poor. Jadeja has not been that good as well. Only Washington Sundar has bowled pretty well in this series. Bumrah has not been. से आगे डाल रहा. Jasprit Bumrah again not been on that level that we expect him. So overall, देखो, I mean fast bowlers को छोड़ दो. If you look at the context of this test match, majority of the wickets are from स्पिनर्स. तो आई मीन स्पिनर्स के ऊपर ही आप टूट सकते हैं. हाँ चलो ठीक है, सऊदी ने एक बॉल निकाल लिया न्यू बॉल के साथ, बट आप न्यू बॉल अश्विन को दिए, आप यू नो जसप्रीत बुमराह को दिए भी नहीं न्यू बॉल. सो आई थिंक वो हिसाब से भी आप थोड़ा सोच सकते हैं कि हाँ चलो फास्ट बॉलर्स पे इट्स बिन हार्ड रिवर्स भी नहीं हो रही है आपकी बॉल के, हाँ चलो भाई रिवर्स स्विंग हो रहा है. तो जो भी एंड ऑल्सो जो भी हमारे भाई चैट में जोड़े भाई, डू हिट द लाइक बटन, दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज हम लोग हर सीरीज़ कवर कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, IPL से लेके यू नो CPL से लेके इमर्जिंग कप, इंडिया लाइक पाकिस्तान, इंग्लैंड, एवरीथिंग. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड लाइक. जो भी आपके सवाल थिंग है. तो रिजवान भाई बोले कि हाय भाईजान, कैसे आप? साजिद खान, मैं भी फैन भाई साजिद खान और नौमान अली ने क्या नचाया है यार. बेचारे अबरार को तो वो फर्स्ट ट्रैक दिए, बेचारे को बुखार में फेंक दिए. अनफॉर्चुनेट, आई फील बैड फॉर हिम. But this is a spinner's paradise. I mean, credit to Rawalpindi ground staff, big fans, PCB. You
turned out like Pakistan Bangladesh से जो Pakistan England first test था, that journey was just horrific for any team. And Aqib Javed? Aqib Javed, yeah, and Aleem Dar. And एक और कौन थे यार, उनका नाम भूल गया. कैसा भूल गया? Aleem Dar, Aqib Javed, the main guy bro, the star. शान मसूद. अच्छा, मैं सेलेक्टर में चले गया. शान मसूद इनक्रेडिबल. अब भाई आप कहाँ से हो? मैं कराची से हूँ. हम लोग हैदराबाद से हैं, इंडिया हैदराबाद से हैं भाई. हाँ जी. तो या आई मीन तो यू हैव टू क्रेडिट ऑल ऑफ दीज गाइज. एंड इंग्लैंड अगेन, इंग्लैंड की मुस्तफा भाई बात नहीं करे अपन ज़्यादा. वेरी पोर बैटिंग. हाँ वेरी पोर. आप देखो वही बैट्सबॉल खेलने के. बट ऑल्सो दिस इज द वीकनेस. वी न्यू दिस. इंडिया में भी देख लो आप, उन लोग को टर्न में समझ में नहीं आता. वही इसलिए आपको ऐसे पिचेस लगाना था. यस दे डिडंट शो दैट इंटेंट, दे डिडंट शो द ग्रेट एंड डिटर्मिनेशन. एंड ऑल्सो देयर bowlers got outplayed by the Pakistani bowlers. If you see like Leach, Bashir, they couldn't break that partnership. They couldn't get Saud Shakil out. वहाँ पे भी मैच आई थिंक पलट गया because जब आप 180 for 7 कर दिया पाकिस्तान को, आई थिंक वहाँ पे गेम स्विंग हो गया. लाइक 300 तक पहुँच गया पाकिस्तान. वहाँ पे ऑल आउट कर देना था मेरे हिसाब से. चार मीनार वाली सिटी, यस, चार मीनार हैदराबाद वाली सिटी है हमना. फ्रॉम द सिटी ऑफ नवाब्स एंड निज़ाम्स. Qasim Akram is another good. Oh yes, emerging. Man, he was fantastic, man. Like I mean, they also lost to Sri Lanka, if I'm not wrong. I think they lost to Sri Lanka as well. But yeah, Qasim Akram, Sufyan Muqim, बेहतरीन bowling करे. Qasim and Umair bin Abdullah, one of these guys in the middle order with Qasim was very good to watch. मतलब काफ़ी अच्छी टीम थी. एमर्जिंग की फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की. जो मतलब पाकिस्तान की फील्डिंग हम देखें नेशनल टीम की, लाइक वर्ल्ड कप 23 में अच्छी नहीं थी, 24 T20 में. बट ये एमर्जिंग वाले बच्चे लाइक ये कहाँ हैं? भाई मोहम्मद हारिस, चलो ही वर गुड कैप्टन, ज़्यादा रन नहीं निकले. आई थिंक मोहम्मद हारिस का थोड़ा फॉर्म बोल सकते हैं, बट एज अ कैप्टन ही वॉज डिसेंट. अच्छी रोटेशन करी बॉलिंग की. तो या इवन इंडिया की जो ए स्क्वाड थी बहुत इंप्रेसिव थी. सौरभ भाई ने दिल जीत दिया. सौरभ भाई तो हमेशा दिल जीतते हैं. आई थिंक सौरभ इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट पाकिस्तानी बैट्समैन इन टेस्ट फॉर्मेट. व्हेनेवर इज अ सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान फेंस पे है या पाकिस्तान को कोई खड़ा होना है पिच पे, you always have Saud Shakil there to deal with it. साइम अयूब को ड्रॉप करना चाहिए साले को. अब्दुल्ला शफीक के जैसा बेवकूफ़ बैट्समैन कोई नहीं है. अभी साइम अभी यंग है, उन्हें इनएक्सपीरियंस्ड है. आई थिंक ही विल डेवलप एज अ प्लेयर. अब जैसे देखो इंडिया में जायसवाल है, ही विल आल्सो मेक मिस्टेक्स. साइम अयूब विल आल्सो मेक मिस्टेक्स लाइक दैट. मगर अब उसको बैक कर रहे हैं, आई थिंक बैक करना चाहिए. गलतियां तो करता, मैं भी नोटिस करा, लेकिन आई थिंक ही स्टिल अ यंग प्लेयर. थोड़ा और बैक करके देखो. आई थिंक ओवरऑल इट्स बिन अ ग्रेट सीरीज फॉर पाकिस्तान. स्टार्टेड ऑफ रियली पोरली, दे गॉट स्मैश्ड आफ्टर हिटिंग 500 runs, but they've come back pretty well. Pant also. Did you see when Bashir and Rehan were batting, players were telling Rizwan to not speak loudly as they understand Urdu, and he said it doesn't matter. I mean, I didn't see that particularly during the game, but yeah, Rizwan is like a character, bro. No, ये तो भड़बड़ा है. हमारे हैदराबाद में भड़बड़ा बोलते हैं, बक बक करते रहता. तो वो है रिजवान. अभी न्यूजीलैंड का जो लीड है 301 है, ये जा सकता 400 तक. इंडिया 406 टेल के ऊपर है. आई मीन क्या हुआ 400 अगर बैट आउट कर दिए तो भाई देन वी गॉट क्वालिटी बैट्समैन. इफ नॉट देन वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. इट्स ओनली गोइंग टू बी day 3 by the way, so there's plenty of time to chase it down. Yeah, there is time to chase it down, but like we said, they're not waiting on the pitch. Like आरे wicket दे रहे, थमा दे रहे, चले. We need a Gabba kind of innings. Pant, Rohit Sharma, Virat Kohli. I want to stay. You know, Saud Shakil innings. That's exactly what. Like, yeah, I think India need like a proper, like a proper chase at least. Rahul Dravid right now. Yeah, fight. Rahul Dravid. अच्छा fight दो and जिताओ match कैसा भी. My favorite batsman only Rohit Sharma only. I mean, yeah, he's an incredible batter. Taste. Pant was also players were saying don't pick. अच्छा Ajaz Patel का बोल रहे हैं. I saw that as well बोल रहे हैं. इब्राहिम भाई कितने मैच देखते हैं यार. Like दोनों वही चीज बोल रहे थे. पंत एंड रिजवान. या अपने जैसा रिजवान को बोलते मत बात करो, मतलब पंत भी बात कर जब एजाज वाल अंडरस्टैंडिंग. So it's like नहीं, I don't care type वाले attitude. I mean wicket keepers थोड़े usually goalkeeper, wicket keeper, their characters they like to express. He's saying Pant also replied doesn't matter. हाँ, so maybe they have the same thing. That's crazy coincidence. Yeah. So देखना पड़ेगा. मैं कल तो देखिए मुस्तफा भाई, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन कल इंडिया का न्यूजीलैंड का? I think 360 370 टारगेट रहेगा. हाँ, एंड इंडिया का प्लान ऑफ एक्शन? I mean, it's going to be tough, like because the wicket is going to turn, it's going to break down even more.
I feel that New Zealand will win this test match. Lekin if India they need a big innings from Rohit Sharma, need a big innings from Virat Kohli, and then someone like a Pant Jadeja to finish it off. It'll be very, very tough. If they do it, it'll be outstanding. And then I'll be tempted to go to Mumbai to cover that last test match. If India wins this, I'll definitely try and go. If they, so let's see what happens. रिजवान भाई क्या तुम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हो भाई? पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा क्या हमें वो भी नहीं मालूम है एज ऑफ नाउ. अभी तो हम रुके हुए हैं. नेशनल स्टेडियम कराची बन रही है, गद्दाफी स्टेडियम में भी काम चल रहा है. लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है डेडलाइन वहाँ की. आईसीसी वालों ने बोला है. अब देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ मैचेस होते हैं, क्या होता है. जब भाई आई मीन इट बी अमेजिंग वहाँ पे कवर करना. क्रिकेट में कभी कवर नहीं करा, लेकिन हम बहुत सुने गद्दाफी स्टेडियम के बारे में, रावलपिंडी, कराची, वहाँ पे खाना भी बेहतरीन मिलता. इट वुड बी इनक्रेडिबल. वी डोंट नो कहाँ चैंपियंस ट्रॉफी है एंड या वी डोंट नो. अभी तो इंतजार है पहले आईपीएल के रिटेंशंस का, वहाँ पे क्या होने वाला है अभिषेक शर्मा का और इसका उसका. बट डेफिनेटली अगर मौका मिले तो व्हाई नॉट. डू यू थिंक देयर विल बी सर्जरी इन इंडिया इफ वी लूज द बीजीटी? Yes. Of course, bro. Like, but I think we have to back the players. Like, I go in that mindset. Like how you back KL Rahul, you'll have to back Virat Kohli, Rohit Sharma now. This is their time. They've lost one series. Virat Kohli has not lost a series in India in a long time. He has a problem with spin. He needs to improve that. But I think I'm going to back him. I think in Australia, he's going to be your key batsman along with Rohit Sharma. And hopefully they do have a great series. If they don't, then of course there will be talks, there will be and everything. But we have short memory too, right? These are world champions. लोग अभी निकल के आए वर्ल्ड कप जीत के. अलग फॉर्मेट था, लेकिन we have short memory. I think it's also a humbling loss because if you win everything at home, now you'll prepare better even at home. You'll understand. थोड़ा सा wake up call बोल दो आप ऑस्ट्रेलिया को जाते because वहाँ पे अगर एकदम से यहाँ पे से कि घर के शहर, अगर अब तो घर के शहर नहीं है, यहाँ पे भी हार रहे हैं आप, तो वहाँ जाके एटलीस्ट और डिटरमेंट रह सकते हैं आप. घर के शहर तो बराबर है. 12 साल हो गए स्टार्ट. लाइक थोड़ा अपन भी सोचना 12 साल से जीत रहे, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है. अभी भी हारे नहीं. रुक के देखेंगे क्या होता है आगे. I am not going to watch tomorrow because today was horrifying day for Indian Test cricket. I'll go to see Venom 3 instead. I have extra tickets if you want to join. Most welcome. Thank you so much for the offer. मैं Venom 1 yeah, Faz will come. मैं Venom 1 और 2 देखा ही नहीं. Faz, that's why you'll go 3 and he'll give the review. Faz will come along with you. But I think look, like I understand, like I'm not going to force you to watch that test match. Like I understand where believe, man, Karthik bhai, believe. But like it's always a good, even if they're losing, it's just if you like cricket, it's good to appreciate the opposition as well. उन लोग की भी आप bowling batting देखो, you get to see Mitchell Santner, Glenn Phillips. हल्के में ले लिया और कुछ नहीं न्यूजीलैंड. Yeah, again it's a sport, game है, हार जीत होती रहती. I know अपने parents बोलते रहते हैं, but end of the day that's what it is, right? So like if India is not doing well, there is New Zealand who are playing well. We can appreciate them. Same thing, the England Pakistan game when England are doing well, we're watching, and Pakistan doing well, we're watching. So that's part of the sport. भाई गद्दाफी स्टेडियम जनवरी तक पूरा बन के था. होपफुली मैन, आई होप के हो एंड अच्छा बने नेशनल स्टेडियम एंड गद्दाफी स्टेडियम, बिकॉज देखो ऑलरेडी उनको इतना डेट्स दे दिए और इतना सब एलोकेट कर दिए बजट. होपफुली टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो, अच्छा हो एंड डेफिनेटली वर्दी थिंग. अगर इंडिया ट्रैवल करी, दैट अगेन क्वेश्चनेबल है वो, लेकिन अगर गई इंडिया तो क्या अलग ही आलम होगा, क्या अलग ही फायर रहेगा. तो देखेंगे. आई मीन वील वेट फॉर आईसीसी की जो लास्ट डिसीजन होगा, तो होपफुली करेंगे. बट या इन द कॉन्टेक्स्ट के भाई न्यूजीलैंड को हल्के में ले लिए, लाइट नहीं ले सकते कोई भी ऑपोजिशन को. वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिकेट बोलते ना, डोंट अंडर एस्टिमेट अ कॉमन मैन. न्यूजीलैंड इज द कॉमन मैन दैट वी अंडर एस्टिमेटेड एंड सौदावा शहर है, आके मार दिया भाई. मैं आपको बोला कि भाई न्यूजीलैंड जो है, उन लोग का यही खासियत है. प्लेयर्स जाते आते, अब देखो हम लोग बोल रहे थे ट्रेंट बोल्ट का कौन है, केन विलियमसन का कौन है, और कहां से क्या आ गया. एंड दे आर विनिंग ब्रो. तड़प के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी इंडिया आती, हारते हारते इन लोग भाई निकाल दिए टेस्ट मैच विदाउट देयर बेस्ट बैट्समैन, विदाउट केन विलियमसन, विदाउट देयर बेस्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट. इंडिया इन द कमेंट्स मिस्टर अमर इज देयर, ही इज सेइंग पाजी की हाल चाल है, सब ठीक ठाक बढ़िया. I mean, I learned a lot from Mr. Amar Ayub. He is a great reader of the game as well, and hopefully I get to see him in the future too. Ripping up teams. Yeah, but yeah, I think Mustafa bhai, आप भी आ जाओ. अच्छा, आप उनको बुला रहे थे, मेरे को नहीं बुला रहे थे. मैं मतलब side. You make me a side piece, bro. They should play Santner like off spinner. How do you do that? Santner like off spinner बोलते हैं. I mean, because I think he's an off spinner, but he turns it the other way, right? Because he's left-handed. अच्छा, okay. So how do you play him? Like how are they playing? I think reverse sweep technically.
I don't know exactly कैसे था. Love you guys बोल रहे. Love you too bro. भाई, Man. love you too. I don't know about Fez. He's just saying हवा में love you, but like हवा में क्या, मेरी मैं खैर जान दो, वो वर्ड नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ नहीं, आई लव यू हमारे. No, I don't think he does, like honest. ठीक है भाई, आप ही कर सकते लव हमारे. I don't think Fez does. घंटे के किंग Omar, but if you remember what I told you, if you do that, then he will love you, right? I'm off spinner. नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं है मेरी नियत. अल्लाह क्या? ना करे. जो आप बोल रहे हैं मैं समझ गया, अल्लाह ना करे वो नियत की. You love him? Yeah, of course bro. Ammar, Fez calling you over to his house today for Definitely, dinner. anytime भाई, आ जाओ कभी भी. घंटे का खुद से king ले कौन बोल रहा है, कहते मैं हैं? invitation दे. आप ही बोलते जा रहे. Ammar, I don't think he loves you. In New Zealand conditions, Saudi Henry O'Rourke and Jamieson will be dangerous. Yeah, definitely man. Like in New Zealand condition छोड़ो, England condition में और को आप like it'll be unplayable as well. And जेमिसन का तो हम ऑलरेडी इंडिया में भी देखे जिस तरीके का प्रदर्शन इन देयर ओन होम कंडीशन, ऑब्वियसली दे विल बी इनक्रेडिबल टू वॉच. एंड या आई मीन बस सऊदी का लॉन्जेविटी यार, कितने साल से खेल रहा है, incredible all formats. या ही जस्ट बीन फैंटास्टिक. तुम्हारा नाम निखिल है ना ब्रो? नहीं भाई, ये मुस्तफ़ा है, मेरा नाम फैज़ है. निखिल कहाँ से आ गया? आई थिंक अगर कोई कमेंट्स में आपसे मिल गया निखिल तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हम लोग मेरे आगे मेरे एज 19 है. आपकी कितनी है? ये भी 16 ही है माशाल्लाह. मैं 31 का हूँ. रोहित शर्मा विल कम बैक, मार्क माय वर्ड्स, ही विल शो यू ऑल. Who's the all bro? We hope he does show man, because we really, and he did show us in Bangalore के second innings में he did show, but unfortunately inside edge लग के उनके विकेट पे बेस उड़ गए. बट रोहित शर्मा जबरदस्त बैट्समैन है, कोई भी नहीं डिनाई करता भाई. यहाँ पे एकता भाई, रोहित शर्मा तो he is insane, but अभी थोड़ी बहुत फॉर्म है. बट ऑस्ट्रेलिया में he is also one of the most important players that we'll have hopefully. क्या बोलते हैं भाई? I wanted to invite you both as we have 4 spare ticket. वो सेंटेंस में गाइस डालना भूल गया था. अरे it's very sweet of you that he wanted so the much. Venom tickets. भाई spare tickets है. भाई तुम भी पठान हो, मैं आधा पठान हूँ. या मैं नहीं हूँ पठान. मैं हाफ हूँ. फॉर माय मदर्स साइड आई एम पठान. इस बार पाई का हिसाब होगा, मीन्स बारी का हिसाब होगा. भाई देखेंगे भाई, पाई का हिसाब भाई, 4 पाई का हिसाब भाई, जो भी हिसाब हो, हिसाब तो करना पड़ेगा. होपफुली रोहित शर्मा उसमें मेन आर्किटेक्ट रहे तो मज़ा आ जाएगा यार. आई मीन आई विल बी मोस्ट हैप्पी. मुसा भाई लव्स रोहित शर्मा. उनको प्लेजर था WTC में, इंग्लैंड में भी उनकी वो 37 था या 50 था जो देखे थे आप सेकंड इनिंग्स में. हाँ 50 मारा था. तो मुसा भाई भी बहुत बड़े फैन है. आई थिंक ही लाइक्स हिम मोर देन विराट कोहली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग दैट. Yeah, watching live, he's an outstanding batsman, 100%. I mean, I like Virat Kohli has his. I like Virat Kohli's match-winning ability, but Rohit Sharma batting, मतलब is very pleasing to the eyes. जब उन्हें shots खेलता है, it's incredible. New include in the BGT बोल रहे हैं अमर. I think Prasidh Krishna is one. Abhimanyu Iswaran is another. Prasidh Krishna is in the squad or is in the traveling? He's in the squad. He's in the squad. Iswaran is there. सरफराज खान भी नया हो जाएगा BGT में. उसके बाद आपका और कौन है न्यू मैन? You can just open the team. हर्षित राणा is there. हर्षित राणा is also there. तो हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा. Man, would you have gone with Prasidh Krishna as your 4th bowler? No. Who would you have gone with? Now I have to think who's there. Siraj is there, right? Yeah. Siraj is there. Bumrah is there. 4th bowler. Akashdeep is also there. Your 4th, who would you have gone if not Prasidh Krishna? Prasidh Krishna injury prone है. हर्षित राणा भी है भाई, तो 5 फास्ट बॉलर है. वहीं से बुमराह भी है उसके ऊपर. शमी. So who would you have gone instead of Prasidh Krishna? सोचना. खलील अहमद कौन है अपने पास रिजर्व में भी, ट्रैवलिंग रिजर्व में भी है 4 बॉलर. मुकेश कुमार, नवदीप सैनी, खलील अहमद. मैं तो तीनों को भी नहीं रहता. प्रसिद्ध का जरा डाउट है I would have stuck with him as my 5th because I'll tell you why. मुकेश कुमार जो है a bit inconsistent. नवदीप सैनी injury prone. खलील अहमद, I don't know man. Test cricket I've not been as impressed. I don't know if you. I mean he's been bowling a lot of quick deliveries now. Pace थोड़ी है उसकी. And दुलीप में भी अच्छा परफॉर्म करा. But yeah, I mean it's been a long time. 2017 was when we saw him last. I think RCB में भी जब ही देखे थे उसको, if I'm not wrong. Abhimanyu deserves his test call for an average of 54. Yeah, he's been incredible. Duleep में भी. I agree 100%. Yeah, I think. थोड़ा ऋतुराज के लिए बुरा लग रहा, but yeah, I mean someone always. I think one of them like either way you would have felt bad. Yeah. NC 301 से आगे हैं bro. मुझे नहीं लगता जीतेगी इंडिया. देखते हैं भाई. Like टेस्ट क्रिकेट इन जनरल फनी गेम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. ये टेस्ट मैच देखो, अगर इंडिया निकाली यहाँ से इट विल बी राइट अप देयर बिकॉज पिच बहुत मुश्किल है.
लेकिन भाई जो बैटिंग करे सेकंड इंडिया लाइक दैट्स इट वाजंट दैट बैड दे कुड हैव हिट एटलीस्ट अनदर 100 मोर Yeah, I रन्स mean वही है ना, just और about केएल राहुल waiting था on the नहीं, pitch, कोई भी waiting था till नहीं। the ball gets हाँ। all getting used to the आप conditions. सरफराज को भी देख लो, जो उसका शॉट, इफ यू वांट टू बी क्रिटिकल लाइक दैट वाज अ इम्पेशेंट शॉट, ठीक है, जस्ट टेक लाइक यू नो ही कुड हैव जस्ट टुकन हिज टाइम, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग Rishabh Pant डिसेंटली, as well, man. बट इवन ऋषभ पंत, विराट कोहली तो भाई आई डोंट वो तो अंडरस्टैंड छोड़ दो, वो तो full. I mean देखो, जितना मेरे को पसंद विराट कोहली डेफिनेटली, बट इट्स जस्ट दैट शॉट फ्रॉम हिम ऑन द फर्स्ट लाइक कपल लाइक 9 balls, आई थिंक वाज जस्ट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि भाई छिक्का मार के मैं, आई डोंट नो व्हाई ही वेंट फॉर अ रिलीज शॉट इन टेस्ट क्रिकेट, लाइक वैसा सिचुएशन दिखा मेरे को। इंडिया में कोई रिजवान नहीं है जो इंडिया हार जाएगी कहते हैं, हमें देखना पड़ेगा भाई, अभी तो इंडिया हारने के ब्रिंक पे है, हारी नहीं है 100%, बट हारने के करीब तो बिल्कुल है। हम लोग इंडिया से का एकता भाई आप अमर यादव सिंह, आई वुड ब्रिंग उमेश यादव और मयंक यादव इंजर्ड, सो या उमेश Man, यादव। Umesh Yadav again. I don't know, man. It's been a long time. Like he's been, you know, he toured Australia first. I would actually go with Yudhvir Singh, the 150 pacer from LGG. Is he fit? I think he's fit. Did he play Duleep Trophy? He did play Duleep. He bowled well. He bowled decent. He played Duleep Trophy. He played some other game, maybe Irani Trophy. ये उमेश यादव मेरे को याद है 2011 में उन्हें टूर करा ऑस्ट्रेलिया को, क्या पिटा भाई, क्या पिटा, जब धोनी कैप्टन था, दे स्मैश्ड हिम, एंड देन आई थिंक उसको 15 में भी लेके गए, लास्ट में मेरे को याद नहीं उन्हें था या नहीं, बट ही इज बीन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द लास्ट 15 years. आई थिंक नाउ वी हैव टू बैक द यंगस्टर्स एंड hopefully they do well. I'm excited to see actually Akash Deep over there. I'm excited to see Prasidh Krishna, if he's fit, he can be a decent bowler. Again, I don't know his fitness. His problem is he had a blower back problem, like that's been persistent with him. So I think India lost where their top 4 didn't perform. 100%. Like that's a great call, man. Thank you first of all for joining. It's been a long time since you joined. Like we know you for a while, but you've joined the show. You have a great understanding of the game, so we understand. We really appreciate your comments, and I think yes, 100%. टॉप 4 परफॉर्म नहीं कर रहे, वही है भाई, वहाँ पे आपको लाइक प्रेशर रिलीज वही होता है। अगर रोहित शर्मा गॉट टू 100 और विराट कोहली गॉट टू 100, दैट्स वेयर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर। सेलेक्ट प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा इन T20 स्क्वाड फॉर साउथ अफ्रीका। आई वुड सेलेक्ट अर्शदीप और यश दयाल वर इन BGT इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा फॉर द लेफ्ट आर्म ऑप्शन। हर्षित राणा राइट, यश दयाल यू सेइंग? या ही सेइंग यश दयाल। फेयर इनफ। प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। तो आई थिंक दैट प्रीटी मच रैप्स इट अप। 1 घंटा हो गया। We'll try to catch some sleep and then catch you tomorrow for the day. Yudhvir made 140 max, but no experience and no performance in Ranji. अच्छा, that's why. But like अच्छा pace है बोल के पूरा Ranji का आएगा तो Ranji का मालूम है। But yeah, I mean जो भी comments में आप लोग लड़ रहे हैं, like रिजवान भाई and I wouldn't like थोड़ा बहुत clear रखो, clean रखो। I mean there's no point of all of this, you know, religion or whatever आप जो भी कमेंट डाल रहे हैं, like just stick to the cricket। आप एक ओपिनियन है, ठीक है, आपको रिजवान नहीं पसंद और आपको रिजवान पसंद और आपको विराट नहीं पसंद, आपको विराट पसंद, जस्ट फेस फैक्ट, ठीक है। क्रिकेट है, क्रिकेट एंजॉय करो, क्रिकेट के बारे में कॉन्वर्जेशन रखो, डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स, इट डजंट हेल्प एनीवन। भाई एक रिस्पेक्ट कर लो, दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट। डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस, ये वो वाले चैनल ना नहीं है भाई। विराट द GOAT बोल रहे Pritish Das, that's what I'm talking about, bro. Virat the GOAT, hopefully just pray man he gets 100 in this. If he comes out of this, bro, incredible 100 रहेंगे ये वाले पिच पे अगर वो निकाल लिया तो। आपको चांसेस क्या दिख रहे हैं? Slim pickings है, but 5% है भाई। We've not lost yet, और जब तक वो scoreboard पे loss नहीं आ जाएगा, you know. Look, definitely the way the Indian team mentality is and everything, they will go for the victory. They won't like हार तो मानेंगे नहीं. Yes. They will be disappointed, but and they need this win. This is very important. If you see in the context of the WTC, if you lose this test match, आपको जाके वहाँ पे 4-5 जीतना है ऑस्ट्रेलिया में। सो यहाँ पे like it's a very important test, so they will give it all. And last time we were in this position, it was at the Gabba, and we know what happened over there. So miracles can happen, but I think it's a very slim chance. Exactly what you guys said, Ekta bhai. The gentleman game should be the gentleman game, cricket, and that's how we should deal with it. Rizwan bhai, Joe Root is the real GOAT. I mean, yeah, that's a different debate. I mean, we'll get into that debate some other time. But yeah, I mean, there are a lot of... Steve Smith and Joe Root, I think, are the top 2 test batters in the world. Right now? Yes, in the modern day cricket. Right now, matlab, in the last 5-6 years, yes. I don't think there's been... I mean, prior to that, Virat and then after that, Virat Kohli, like I would put him there as well, right up there. But if you see Joe Root, bro, like he's scored in Sri Lanka. The only place he hasn't scored 100 is in Australia, but he's got 50-60. He's not failed over there, right? Only and only Yash hits the 150 and we don't lose a wicket till 150. Yashasvi के ऊपर बोला अमर
कि 150 Yeah, total, that's a good shot. again, उन्हें pressure वो निकाल belief सकता है हमारे invoke हो साथ। जाएगा, मोटिवेटिंग फैक्टर तो बिल्कुल आएगा भाई, ये पिच पे खेल सकते हैं। आई थिंक दैट विल ड्राइव फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, लाइक अमर सिंह राइटफुली, कि भाई ऊपर वाले कुछ मारे तो नीचे वालों को यकीन आएगा कि भाई कुछ है ये पिच पे। Still have 3 days to go, anything can happen. Ibrahim Bhai saying, yeah, 100% coming from a South African fan. I'm pretty sure he is very hopeful of England, hopeful of that. It's just the Final of the what the WTC. pitch is showing right now. I mean, New Zealand has shown you can bat on it, but still they've already lost 5 wickets. So if you're chasing 400, it's difficult. Well, again, it comes back down to the How Pala you, innings. what your mindset is going to be when you come out of it? Do you want to try to win this test match? Do you want to at least? There is save no other face option. You and can't stuff like survive. that? Draw तो नहीं कर सकते आप ये टेस्ट मैच। आपको जीतना है नहीं तो हारना है। 2 दिन का दिमाग में रख के चल के 2 दिन है नहीं, अभी 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाकी है, उस हिसाब से बैटिंग करो, या डू यू वांट टू बैट इमीडिएटली लाइक इंग्लैंड एंड ट्राई टू? No, the thing is, the more you wait, the more you get trapped on the pitch. You'll have to score runs, but play the ball to merit. You know what? There has to be a fine balance. It's difficult, but that's it. Definitely. According to you, who is the best youngster? In which format, Pritish bhai, if you can just let us know that. विराट कोहली ODI का गोट है, एंड जो रूट एंड स्टीव स्मिथ टेस्ट का है। इंशाल्लाह बाबर आजम की फॉर्म आया, बाबर आजम होपफुली कम्स बैक टू फॉर्म, एंड होपफुली ये कैप्टनसी का प्रेशर निकलना पड़ेगा उसके अंदर से पूरा, ये वो समा गया। रूट एंड स्टोक्स कैन सेव इंग्लैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। आई मीन बेन स्टोक लुक्स वेरी रस्टी, लाइक ही इज नॉट बीन गेटिंग शॉट्स, ही नॉट बीन एबल टू गेट टू द लाइन ऑफ बॉल, नॉट अंडरस्टैंडिंग द टर्न इन द पिच, एंड या अभी तो बहुत मुश्किल चल रहा है। इन T20, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट यंगस्टर? Best youngster in Abhishek Sharma, bro. Like for me right now, Abhishek Sharma. That's biased from Sunrisers Hyderabad, but Abhishek Sharma is like crazy right now. Yeah, Abhishek Sharma, and from Pakistan, watch out for this guy Abdul Samad. I think he's going to be good, man. I mean, he hasn't played international cricket yet, but I think he'll be good for Pakistan. But from India, Abhishek Sharma, I really like. Yeah, I mean, that guy also, bro. Sai Sudarshan is a good player. Yeah, he's crazy. I don't know. We don't consider him young, right? Do we? 26. Okay, then he's not young. But Abhishek Sharma, 100%. Actually, Amar can tell us better. Abhishek Sharma, 100%. I consider him as. I think Abhishek Sharma is like incredible. Ramandeep is also a very good talent that we've seen in the match. भाई मैं इंडियन को इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि हमें इंडिया के लोग हम, अरे भाई मैं आपको क्या बोला रिजवान भाई, हम लोग भी यहाँ पे बैठे, हम भी इंडिया के, हम भी मुस्लिम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब आप जो चैनल्स फॉलो करते हो उसके हिसाब से आपका दिमाग। If India gets them out for under 350, it's a chance of 30. Bro, I think there's still a lot, man. Maybe 15-20%. हमारे unwavering belief 300 plus. I mean, I'm not saying it's impossible, but 30%, I just feel it's quite a lot. Like, I like the positivity, and I like the way that you're thinking, and you have a better. I don't know what you think, but I feel that as the game progresses, this even if the 350 all out ho jate, day 3 it'll start breaking, day 4, day 5. It's going to get more difficult to bat on. Right? I mean, I think for New Zealand, सबसे बड़ी चीज़ है their batsmen. Maybe you need to try and give time to the bowlers. Like let the sun beat down at least 1.5 sessions, and then it'll be good for their bowlers, right? वरना आप पहले आ जाओगे थोड़ा, maybe it might be not be that turning to that point कि भाई एकदम unplayable हो जाए. So maybe they also need to buy some time for the bowlers so that the pitch bakes a bit more. Yeah. Do you think Stokes is being careful to not injure his hamstring again? That is affecting his batting. Yeah, if he has a lingering injury, then definitely that must be psychologically impacting him, which is leading to these performances. But I don't think like he just really looks out of touch for me right now. All of them do. All of them. I think if you see England, Harry Brook 300 मार के ये ऐसे they all have a problem against spin. They're getting rolled over right now. It's a clear glaring weakness, and yeah, like this is why we're seeing कि ऐसे pitches बनाओ, they will have trouble. Tomorrow the wicket's going to turn. We need to have the left-right combo. As well, Yash needs a long innings. India have a chance. Amar, I also wanted to ask you what you thought about Ashwin. I felt that he underperformed today. In particular, I'm not talking about the first innings, but this innings, the way he started, I felt that thoda sa he could have got more purchase, and he could have been a bit more consistent hitting that length rather than being a bit more inconsistent. Yeah, bilkul. I mean, that's I'll take your leave. Yeah, I mean, Faz will also take your leave. Yeah, we'll catch you tomorrow. Yeah. At similar time, maybe let's see what happens. Kal, hopefully we'll watch the game. We'll let you know what's happening. If there's crazy stuff, we'll come live in between that as well. So make sure you hit the like button, subscribe button. बहुत लोगों जुड़े हमारे साथ आज, बहुत शुक्रिया. Rizwan bhai, it was good talking to you, and yeah, my bhai. Thank you everybody, man. Take Pritish care. bhai, Ekta bhai, and all of these guys who Yeah, joined us really today. Do appreciate it. hit the like button, subscribe button. Everybody who came, that I'm not taking their names, or maybe I just forgot, but. Yeah, Ibrahim bhai, as always, I want to thank him that he always comes from day one. No matter what the time, no matter which series that we're discussing, he's always there. So Karthik bhai as well, hopefully enjoy
Venom Sahil Bhai also had come, and ABC123. So all of you guys, thank you so much. Hit the like button on your way out. Subscribe to our channel if you're not, and we'll see you guys very very soon. Thank you so much.